everybody. A very auspicious beginning to a very innovative idea for covering our healthcare of adolescents. For this, I'd like to invite our most esteemed faculty, Dr. Sharda Jain, ma'am. Please put on the... Madam needs no introduction. She is a teacher of teachers. She has her full heart and brain. She has a full heart into this field of gynecology. Madam is an active, passionate medical activist who has given her leadership role in removing female feticide, movements for eliminating anemia, Save Uterus campaign, and Every Mother Counts. Ma'am has been decorated with many lifetime achievements and living legend awards from many various societies of India. Ma'am, we welcome you to this platform for this lecture. And to introduce our moderator for this session, who will be answering the coordinating the question answer sessions, I would invite Dr. Mridula Sharma ma'am. She is the Vice President of Bareilly Obs-Gynae Society, a very senior consultant of Bareilly, a very active member in Bareilly Obs-Gynae Society, and organizing many health camps for the PM Surakshit Matratva initiative. Over to Dr. Sharda Jain, ma'am. Right. Can I share my screen? That's right. आप हैं खासकर Dr. Preeti, Chairman who represents Inner Wheel Club 312, and all my doctor friends and the members of the Inner Wheel Club listening to us. सवाल उठता है कि why we should talk about adolescent health. जैसे प्रीति जी ने अभी कहा, ये हमारी सबसे खूबसूरत खजाना है, हमारी धरोहर है. अगर आप इसके ऊपर हम काम नहीं करेंगे तो अगर हम कल जगत गुरु बनना चाहते हैं या एक इकोनॉमिक सुपर पावर बनना चाहते हैं, वो ड्रीम्स कभी भी ट्रू नहीं होंगे if we don't work on adolescent. My love for adolescent health started when I was a faculty member at PGI Chandigarh and at Lady Hardinge Medical College, and then on the way I met about 36 people who worked very hard with us, and we jointly did almost 1,000 adolescent health workshops. There was no college in Delhi University which was left out. All medical colleges, dental colleges, engineering colleges, and many private and public schools in Delhi were covered. It was a really pleasurable time, and all my colleagues held very important positions in on WHO, UNFPA and UNICEF, and for the wonderful work which they did with adolescent health. Now this group felt that there are 3 live sessions, lessons which are there for adolescent. They should not feel कि जो हमारा आज फन कर रहे हैं, जो हमें क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो हमारे दुश्मन है. वो आपके सबसे बड़े मित्र हैं, क्योंकि जो आपके मित्र होंगे वही आपको बताएंगे कि आप में क्या फॉल्ट है. दूसरी चीज, इस ग्रुप ने ये सिखाया है कि nobody is perfect. छोटे छोटे फ्लॉज अपनी पर्सनालिटी में उसको इग्नोर करें, अपनी पूरी पर्सनालिटी को लव करें. That is what is gifted to you. And lastly is never get carried away with your marks. Marks तो खाली छोटी सी चीज है. And 3 mantras which we have given to you is for all adolescents. And these mantras are that love yourself, respect yourself, appreciate yourself. आप खुद करेंगे तो आपको जरूरत नहीं रहेगी कि दूसरे लोग आपको ये सब चीजें करें. दूसरी चीज आपको, you should focus on gratitude.
जिन्होंने भी आपको मदद की है, you should see to it in lifetime, you must pay back to them. And thirdly जो है कि focus on your happiness and not on the problems. I'm very indebted to this particular group. As you can see, the problems of adolescents are far too many. ये छोटा सा स्लाइड में बहुत सारी प्रॉब्लम्स लिस्ट की हैं, मैं खाली छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करूंगी एंड मैं सोचती हूँ कि उससे आपको एक बड़ा मैसेज मिले जिससे कि आपको मोटिवेशन मिले कि इस फील्ड में हमें काम करना है। ये 2003 का स्लाइड है कि क्या मेरा प्रेजेंटेशन का एम हुआ करता था। उस टाइम भी anemia was the main focus on adolescent. We had an epidemic of HIV. That time HIV, we were number 2 in HIV incidents in the world. So, ये भयानक सा रूप दिखाई देता था. And STD epidemic is part and parcel of unprotected sex. Teenage pregnancy की problem तब भी थी, teenage pregnancy की problem आज भी है. And then we at that particular time faced female feticide. आज क्या एम है प्रेजेंटेशन का? Our youth or adolescent भूल ही गए कि what they should eat and exercise. Exercise तो उनकी रूटीन में कहीं है ही नहीं. So we need to discipline them. Anemia is the same problem as we had it before. HIV बहुत हद तक कम हुआ है. Now we are number 3 as far the incidence of HIV is concerned. This has decreased a lot, but STD epidemic अभी भी it's on increase. Teenage pregnancy एक बड़ी problem है. मैं कहूँगी कि teenage pregnancy तो कम नहीं हुई है, पर yes, young child delivering another child this has been markedly decreased. And I think हम लोग को serious अगर अब हैं, तो हमको we must address usage of alcohol, smoking, drugs, and sexual abuse and violence in our youth today. We must congratulate the government of India in its effort कि female feticide खत्म हो गया. Today in 2022, the girls are 51%. दिल्ली और यूपी में, दिल्ली और पंजाब में अभी भी जो सेक्स रेशियो है वो 950 से कम है. आपके नॉर्दर्न स्टेट में जिसमें यूपी भी इंक्लूडेड है उसमें द इंसिडेंस इज 952,000 के करीब है. और सब रेस्ट ऑफ द इंडिया में द इंसिडेंस इज द फीमेल्स आर मोर देन द मेल्स. बट नाउ द गवर्नमेंट हैज टू कीप अ चेक फॉर अनदर 10 years जिससे कि हम कह सकें कि यस फीमेल फीटिसाइड और कन्या भ्रूण हत्या का जो अभिशाप हमारी सोसाइटी के ऊपर था वो खत्म हो गया है. Now as far as adolescent in the world are concerned, the number is 1.3 and India contributes to 253 million adolescents are there in our country, which make about 22%, and it was almost the same in 2000. ये जो period है ये there's a lot of opportunities and there are a lot of risks are there, but I think we have to handle this particular group very carefully because ये हमारा सबसे बड़ा खजाना है. And if you want to do something tomorrow, अगर India has a very big dreams, we cannot ignore this particular group. Society जितना भी adolescent के ऊपर काम करती है उतना ही ये results देते हैं क्योंकि जो habits और behavior हैं which are picked up during the adolescent period time, they have a lifelong impact. We want a healthy race, we want an energetic race, we want enthusiastic and a patriotic adolescent population. We cannot afford to ignore this particular group. They are not to be considered problems. They are our biggest human resource which we have to develop. आजकल लड़कियां हर फील्ड में आगे हैं और 10th में भी हाईएस्ट नंबर इनको मिलते हैं, 12वीं में भी इनको हाईएस्ट मिलते हैं, फिर पता नहीं कहां पर इनकी प्रायोरिटीज
lopsided हो जाती हैं. I will focus on this. जैसे वर्षा जी ने कहा कि ये जो पीरियड है बड़ा ट्रांजिशन पीरियड है फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड. यू फाइंड कि जब बच्चे को पिताजी के शूज आने लगे तो बच्चा बड़ा हो गया, और जब बच्ची माँ की साड़ी पहन ले और लोग कहने लगे कि तुम तो अपनी माँ जैसी लगती हो, तो उस टाइम हमें ये भी सिखाना उसको बहुत जरूरी है कि तुम माँ जैसी लगती हो पर तुम माँ जैसा काम भी कर सकती हो. यू कैन रिप्रोड्यूस, यू कैन प्रोड्यूस चिल्ड्रन. एंड उस टाइम उसको समझाना बहुत जरूरी है कि इस मेच्योरिटी के साथ आपको डिग्निटी एंड डिसिप्लिन भी लाना होगा. So at this particular time, she is pretty exciting time, but she's confused. And for that, she requires information. Information is what is required by them. हमें उसको बताना है कि what is all about growing up, because they do not know anything about it. एक ही क्लास में 6 फीट का भी लड़का है और 5 फीट 5 इंच का भी लड़का है, तो there is a disparity. You got to tell that particular child. We have to also tell that it is very normal to be attracted to boys, but at the same time we need to tell them about the reproductive system, कि कैसे pregnancy आती है. Once they know about it, they will never indulge in that kind of activity. Self-esteem and your personality is very important. Body image में obsess होके बैठ जाना ठीक नहीं है. So they require, in this particular path ahead, reassurance from us, support from the parents, teachers, and the doctor community, and the guidance. हिंदुस्तान में भीड़ की कोई कमी नहीं है, but every child has an aspiration. Every child wants to succeed. Parents के भी अपने dreams हैं उन बच्चों के लिए, and the child wishes to stand out. And here at this particular stage, the child requires awareness, and awareness. It has to come from parents, which have almost washed away their hands. They do not sit down with their children and talk to them. Teachers का भी बहुत बड़ा role है. And we healthcare professionals also need to skill ourselves very specifically how to counsel them and how to take life skill workshops. They're not easy. आपको पहले खुद ट्रेन होना पड़ेगा किस तरह से ये लाइफ स्किल वर्कशॉप हमें स्कूल्स में करनी है. एंड एवरी चाइल्ड शुड बी एक्सपोज्ड टू दीज लाइफ स्किल वर्कशॉप्स. नाउ इन द लास्ट 75 years of our independence, anemia is still causing red alert. दुख लगता है. When I was student, anemia was rampant. In year 2000, when we started aggressively work on anemia, the incidence was 90%. 9 out of 10 children and girls and ladies had anemia. And what is in 22? It is still the same, 60%. कुछ कम हुआ है. But then again we did in 22, we took 2 slums and we again tried to do a survey of anemia in that particular thing, and we found it is not 60%, it is 75% plus. Now what does anemia does to us? It makes us lazy. We did a study in 2000, and again we did a study in. We found out from the various blood centers that what is the incidence of anemia in girls who are coming for blood donation. Earlier it was 90%, and now we find 75% of the Delhi University girls who volunteered for blood donation were rejected because their hemoglobin was less than 12.5%, which is must for blood donation. So fatigueness, weakness, dizziness, सब पर्यायवाची शब्द हैं anemia के. It makes us a lazy race. Chinese बड़े proudly कहते हैं कि India is a lazy race, they cannot compete with us. Now it is having a very bad effect
जो एडोलेसेंट पीरियड में जो 10 से 20 साल के बीच में ग्रोथ होती है, this secondary growth spurt is markedly hampered. The school performance gets badly affected, and our capacity to do manual work also goes tremendously down. This is a WHO model on anemia, which has been there for almost 25 years, and it shows अगर patient को गर्ल को mild anemia भी है, that is hemoglobin between 10 to 12 gram%. लड़का और लड़की की जो वर्क परफॉर्मेंस है gets tremendously affected. जो उसने प्लान किया है सुबह से शाम तक के लिए, 2 बजे तक उसको घंटी बजाती है कि जी मैं थक गई, चलो घर चले. Child development, I told you the secondary spurt, a growth spurt which should happen in adolescent period time, that is also affected badly, and the school performance is affected. Mortality तो जब भी हीमोग्लोबिन आपका 5 से कम होगा तभी आपकी mortality होगी, चाहे वो माँ में हो, चाहे बच्चों में हो, चाहे children में हो. So this particular model of WHO on anemia we should never forget, and we should work mild anemia को ही हमें काम करना. The silver lining is that 40% of us are not anemic, but another 40% only mildly anemic. उसमें जरा सी पुश करने की जरूरत है तो हमारा काम बन जाएगा. Here I will tell you what is China's model. We must learn from them. जब एक चाइल्ड नॉर्म आया वहां पर तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी में माओ साहब आए, उन्होंने कहा the diet, the exercise program daily of every child and excellence should be the buzzword. उन्होंने माताओं को कहा कि आप ना चाइनीज ट्रेडिशनल फूड देना बंद करें. हर स्कूल में there was an exercise program. मेरे पास आज टाइम नहीं है बताने का, क्योंकि अगर वो वाली चीज बताना शुरू कर दूंगी तो ज्यादा परेशानी हो जाएगी. 8-8 मिनट का सेशन होता था 3 बार. एक बार स्कूल के चारों तरफ बस्ता रख के आप दौड़ के लगाइए, और 2 ब्रेक सेशंस के अंदर 8-8 मिनट में वो आपको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, प्राणायाम वगैरह सब सिखाते थे. द रिजल्ट इज इन फ्रंट ऑफ यू. उनका कोई भी स्पोर्ट्समैन 6 फीट से कम लंबाई से कम नहीं है. Their IQ has increased and they are much, much healthier. If China can do it, India can surely do it. What mantra for diet they gave? Soya bean. This is one thing which has got 50% protein. हर अम्मा सुबह 100 ग्राम प्रोटीन, 100 ग्राम सोयाबीन उबालकर हर बच्चे को देती है, हर बड़े को देती है, हर अडल्ट को देती है. So at least प्रोटीन की रिक्वायरमेंट आपकी पूरी हो जाती है. And they taught them to take a rainbow diet. This is the exercise program I was talking about. 8-minute workout 3 times. They taught to each and every child in China, if they can do it, we can do it. And they also told them the value of the warm water. कहीं पे चले जाइए चाइना में, कूलर में गर्म पानी ही निकलेगा, ठंडा पानी नहीं निकल सकता. What I learned after working for anemia for a long time, कि आपको ये 5 A's याद करने पड़ेंगे. पहले उससे पूछो तुम्हारा हीमोग्लोबिन क्या है, तुमने कब कराया, और क्या नॉर्मल होना चाहिए तुम्हारा हीमोग्लोबिन. तो वो बताएगा कि अगर लड़की है तो उसका 12 से कम नहीं होना चाहिए, लड़का है तो उसका 13 से कम नहीं होना चाहिए. इस टाइम आप उसका हीमोग्लोबिन करो, आपको 9-10 ग्राम लगेगा, तो उसको डेफिशिएंसी पसंद नहीं है. वो अपने आप को कभी भी जरा सा नीचे नहीं रखना चाहता दूसरों के कंपैरिजन में. आप इस टाइम आप डाइट बताओगे तो वो डाइट पूरी सुनेगा, आप उसको टैबलेट दोगे तो टैबलेट लेगा, और आप उसको डीवर्म की करेंगे तो वो नाली में नहीं फेंकेगा. And then you'll find the magical effect of your treatment happens. So let's pledge to make anemia-free India, anemia-free schools in UP, anemia-free families, which I feel Inner Wheel Club takes an initiative, they can definitely do wonder. And Foxy should see to it that every girl, adolescent girl, should have a hemoglobin of 12 gram plus. Now, anemia and malnutrition are 2 sides of the same coin. Very easy to detect anemia. Malnutrition थोड़ा difficult subject है, पर anemia नहीं होगी तो बिल्कुल malnutrition नहीं होगा. आज से 20 साल पहले
हमारी जो लड़के लड़कियां थी 40% they were stunted, and today the figure is around 22%. We have to work hard on it because नरेंद्र मोदी की एक ही एक्यूजेशन है कि आप malnutrition नहीं ठीक कर रहे, एनीमिया ठीक कर लो तो जब भी एक लड़की हमारे पास आती है with unwanted pregnancy, वो एक चीज कहती है, हमारी अम्मा ने ये नहीं बताया कि क्या लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए. I repeat again कि mothers have to do this particular role कि हमारी लक्ष्मण रेखा. Now, because it has not been told, unprotected sex is rampant. And 5वीं क्लास की लड़की से भी पूछो कि unprotected sex के क्या 2 गिफ्ट्स हैं, वो बताएगी कि pregnancy and sexually transmitted disease, especially HIV. एक चीज और मैं बताना चाहती हूँ, WHO कहता है कि 1 in 5 teenager is sexually abused. लड़की ज्यादा, लड़के भी कोई छुपे नहीं हुए. But I will say our experience of doing 1,000 workshops shows it is 50%. It was very sad to hear from girls in Lady Harding Medical College, in Maulana Azad Medical College, and other medical colleges, that itni medhavi ladkiyan also, they were not left out. 50% were sexually abused. And these days were classmates se to bahut kam. ये जो home Romeos हैं, cousins and sugar daddies, जो आपके grandfather की age के हैं, आपके ताऊ जी हैं, ये they exploit the girls of the house. And I think, something great has to be done on this particular aspect. Again, my request to Inner Wheel Club to see that kind of awareness has to be there. So when the unwanted pregnancy is there, it is very sad to see a child becoming mother. मैं कहूंगी कि पिछले 20 सालों में teenage pregnancy तो होती है, but काफी it is avoided by using emergency pills and they seeking medical abortions. You find that the people who are coming for delivery are very few now. Earlier it was 20%, and now in a rural area it is 10%, and in urban areas 5%. And this is because they resort to abortions early. Now coming to HIV picture, HIV and STD problems as far as India is concerned. HIV, मैंने बताया था 20 साल पहले we were number 2 as far as the incidence of HIV in the world was concerned, and now we are number 3. These are 2010 figures that 3,000 cases were added every day, and every minute a child was affected by HIV. We find the awareness has increased, but ये बड़ी superficial awareness. This I call I know syndrome. आप पूछो HIV के बारे में पता है बेटा? हाँ. चलो full form बताओ HIV की, blank. AIDS की full form बताओ, blank. So they don't know anything. They say I know. The facts in 2022 are that 30% abortion seekers are still below 20 years, and 25% of sexually transmitted disease victims are also less than 20 years. The figures on 22 are that every third child is taking alcohol, every third child is smoking, and 5% are used to drugs. And सबसे unfortunate बात है कि adolescent girls, especially women, girls are involved in drug trafficking also. एक और trend आया है. अभी तक तो we used to think, there is a destination weddings. But now in the upper class, there is called destination birthdays. दिल्ली में रहते हैं तो जयपुर में बर्थडे हो रहा है. और destination वेडिंग गिफ्ट आप बच्चे जो हैं अपने फ्रेंड्स को देते हैं कि चलिए कमर्शियल सेक्स वर्कर के पास जाते हैं. लेट्स हैव एन डायरेक्ट एक्सपीरियंस. मैं मैडम ये 20 साल पहले की बात कर रही हूँ, आज भी ये उतना ही ट्रू है.
I will be failing in my duty if I don't tell about epidemic of mental disorders. The government of India admits that this is becoming a very big problem. 40% children are having anxiety disorders because of the cutthroat competition, and 75% have depression as a problem, and something drastically need to be done as far the counseling is concerned. I can see a very good healthy trend in the last 5 years that Narendra Modi takes a class before the class 10th and the 12th examination. He do not take your marks very seriously. And flimsy cheezon ke upar, these adolescents take bad decisions of committing suicides. You can see here, I don't have an exact figures. We have something like 1.3 lakh cases of suicide, and out of that 60% are less than 25 years. So something, again, here they require a counseling that they have to be mentally very strong. Again, I will be failing in my duty if I do not mention about the morbid obesity. It's not a big problem with us. It is 20% with boys and 10% with girls. But I think, as the word says, that this kind of obesity is associated with a lot of comorbidities. And I think we mothers have to put a full attention on them, what they eat, a big no to junk foods, and giving them a healthy diet, as China had done it. We need to do it ourselves. I'm a very strong believer that PCOD will have a weight, but I think it's the increase in weight which causes PCOD. We'll find many people with us who have been mothers. They did not have any difficulty, but once they gained weight, they started having a periods every 3 months, 4 months, and they have a typical picture like a PCOD. So it is the weight which is also a thing. वेस्ट में तो ये बड़ी कहावत है कि जब भी ऐसा पीसीओडी के लेके जाते हैं वो कहते हैं अपने हिंदुस्तान जाओ, वही डॉक्टर्स आपकी ट्रेंड है आपका काम करने के लिए, हम आपकी इस पीसीओडी को ट्रीट नहीं कर सकते. सो आई थिंक अगेन मदर्स के लिए गाइड है कि यू शुड गिव देम अ राइट काइंड ऑफ फूड एंड नॉट गेहूं, मैदा एंड सूजी भरा फूड. अगर बच्चों को अभी भी आप आलू की सब्जी और पूरी खिलाएंगे, our problem is not going to be okay. So I think high time has come. It's a waking call for all of us that we must get the things right the first time. Do you want your child to have alcohol? Do you want your child to have a smoking or take drugs and indulge in sex, and that also unprotected sex? We need to sit down with them, tell them about the growing up. Tell them to some extent body image is important, but they should not lose a priority as far as the studies are concerned. Image is not everything. These figures have changed. 20 years back when I used to talk, there were other figures, and now they are different. You have to tell them that you have to love yourself. जो भी आपके पास है छोटे मोटे flaws को ignore करो. Appreciate yourself and respect yourself. And you need to appreciate other people, give them an attention, affection, and appreciation. Happiness should be your main focus, and you should inculcate a feeling of gratitude. Count your blessings. Doctors' ka role to fight out anemia and malnutrition is there. We need to teach them about menstrual hygiene. Sex education and life skill workshop has to be only done by doctors. And I think, even non-medicals can get trained. In my group, which I was talking about, there are more than 50% were non-medicals who are beautifully trained in life skill workshops. We have to teach our girls self-defense courses, and also conduct from time to time personality development courses. These are much more important than the regular study sessions. We doctors, gynecologists have to address their menstrual concerns. 20% work has been done, but 80% work has still yet to be done. And they must exactly know when to seek the doctor's help. If the menstruation has not started by age 16, if they have started periods earlier than 10 years, if it occurs less than 21 days and more than 35 days, and if the periods are heavy or scanty, if they're painful even after the periods are over, and if they have not been able to attend school, there's something wrong with your child, and they need to see the doctor. Menstrual hygiene is less said the things, but I think a lot of work has been done in this particular aspect, but that is again just about 20%. 80% girls are still need to have
sanitary napkins, supply to them and at a very cheap rate. And I think, again, Narendra Modi is doing a good job. 1 rupee pad is available, which I think too is great thing. मैं यहाँ पर बहुत सारे लोग बड़े बड़े लोग हैं, मैं ऐसा बताना चाहती हूँ कि जो ये conventional pads available हैं, जो bleached पैड हैं, it is said that they cause endometriosis and cancers, and I think we will have a separate talk sometime else on this particular thing. हमारी कंट्री में पहले एक चीज ये कहते थे कि इस कंट्री में कुछ नहीं हो सकता, but times have changed. One can change anything in this country provided we focus on those things. We doctors need to equip ourselves. All doctors automatically do not learn anything about adolescent health during MBBS time and during our post-graduation time. We need to be sensitive and motivated to work for adolescents, and we have to make them feel at ease in our surroundings and our clinic, and we must be very positive about their needs. As for adolescent health, workshops are needed for both boys and girls, but girls, it is really needed, and it should be a mission mode for IMA doctors, Foxy doctors, and all doctors involved in this particular field. I feel they must learn to communicate. कहते हैं ना कि and they should be assertive. Boys कहते हैं कि इन लड़कियों की हाँ में ना में भी हाँ है. That thing should go away, and that should go away कि वो इतना बढ़िया self defense course करें कि एक थप्पड़ लगे तो वहां जाके गिरे. They must learn how to negotiate. They must learn the critical skills, the coping skills. These are very, very important. And again, I will say that they should feel that जो उनका fault बताता वो उनका सबसे बड़ा मित्र है, और nobody is perfect as far the body is concerned, and marks are very immaterial. शुरू में आपको जॉब वगैरह मिलने में थोड़ी सी मदद करता है, but बाद में marks का कोई रोल नहीं है. These are, we need to teach them how to say big no. खुद को बोलना है कि मुझे स्मोकिंग नहीं करनी, मुझे ये नहीं करना, मुझे ये नहीं करना, और जब peer pressure हो तो भी हमें big no कहना आना चाहिए. I think, it can be talk for hours on this particular thing, but I think they must know the goal setting, problem solving, and decision making. They have to learn. Parents का बहुत बड़ा रोल है, because जब बड़े होते हैं तो आपको बस यही sweet memories याद रहती हैं. We have to love them, but we have to discipline them. This ringmaster approach will not work. It will not work. And this kind of situation on a dining table between the mother and child should never happen. Shouting at each other. We must love our children. We should be friends with them. And 75 years of independence have gone. This girl says, I love my country. So we have to give back. So we have to make a serious commitment to do something which is doable by me. Foxy में बड़ी culture है कि ये कहते हैं हम ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, which never materializes on the ground level. I think, that culture has to be changed from webinars to directly to the schools. And, we should have one goal, one path, that is to tackle the adolescent health in a very positive way. And that will be a big tribute to all our adolescents. So thank you very much for patiently listening me, but I can answer any questions if there are many things which I've left. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am, for such an informative and enlightening lecture. And truly said, ma'am, communication is key to everything. We should sit with our adolescents and discuss with them to balance the new risks and the new opportunities so that they can have a more positive attitude towards life. Ma'am, I will now invite Dr. Mridula ma'am to please start with the question session. I think, Ruchika, before Dr. Mridula takes up, thank you, Dr. Sharda Jain ma'am. It was a wonderful talk. बहुत अच्छा आपने बताया. और डॉक्टर वर्षा और जितने इनर व्हील क्लब के लोग जुड़े हुए हैं, अगर आप लोग के कोई सवाल पहले एडोलेसेंट हेल्थ से रिलेटेड हो तो आप पहले पूछिए, उसके बाद डॉक्टर मृदुला 2-3 सवाल जो इम्पोर्टेंट है वो पूछ लेंगे. तो डॉक्टर अनु, डॉक्टर वर्षा या जो भी लोग जुड़े हुए हैं, अगर कोई पूछना चाहे सवाल तो वो पूछ सकते हैं. ओके मैम.
डॉक्टर प्रीति, आई थिंक आई कैन इनिशिएट मैम से पूछते हैं, हम शुरू करते हैं। डॉक्टर वर्षा कुछ बोल रही हैं, अनम्यूट कर लें। डॉक्टर वर्षा अनम्यूट कर लीजिए। प्रीति, हमारे जो मेंबर्स हैं वो यहाँ पर पूछ सकते हैं, उनकी वॉइस चैट में डाल दें तो वो क्वेश्चन आ जाएगा। अच्छा मैडम, उनको बोलिए चैट बॉक्स में लिखिए, फिर वो पूछ लेंगे। तब तक जो क्वेश्चंस हैं हम लोग के पास अभी 10 मिनट है। जी वर्षा जी, हम तो मैम आपकी टॉक ऐसे मेस्पराइज्ड और स्पेलबाउंड होके सुन रहे थे। कहीं पढ़ते थे पहले कि उनकी बातें सुनो, हर शब्द मोती है, तो आज वो जाना सच में मैम कि हर शब्द वो जो है मोती, जिसको हमें समझना चाहिए और कहीं ना कहीं उसको अपने जीवन में उतारना भी चाहिए, एज डॉक्टर्स, एज मदर्स, एज पीपल इन द सोसाइटी, दैट व्हाट वी कैन डू। आपने कोई भी ऐसा पॉइंट है जो मैम यू हैवंट लेफ्ट एनी पॉइंट, एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द रेलेवेंट थिंग्स यू हैव कवर्ड, बट आई हैव certain questions which have been given to me by the inner wheel members from Bareilly. So one question which is from Meeta Sharma, the Bareilly is district 311. जो इनर व्हील के यहाँ पे सब पदाधिकारी हैं वो मुझसे बेहतर वो सब जानते हैं कि इनर व्हील जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे, इट इज 311, एंड नीता शर्मा, शी हैज बीन अ चार्टर प्रेसिडेंट ऑफ क्लब ओवर हियर, एंड शी सेज ये जो she is a teacher also in a school, and many times the girls are missing the school because of periods, and the mothers are coming to them कि ये उठती नहीं है और ये आ नहीं पाती है, और ये कहती है कि ये सब चीजें जो हैं डाइट के बारे में उनका कंसर्न रहता है, और जो वो स्कूल मिस करते हैं। तो मैम इसके बारे में थोड़ा सा आप मार्गदर्शन दीजिए। देखिए, स्कूल मिस करने के पीरियड्स के टाइम पे बहुत चीजें हैं। अगर पेशेंट ये बच्ची स्कूल मिस कर रही है और उसको दर्द है, तो आप मान के चलिए कि एंडोमेट्रियोसिस, पहले जब हम लोग खुद स्टूडेंट्स थे तो एंडोमेट्रियोसिस हार्डली इसके ऊपर चर्चा होती थी, पर आज सब जगह ये चर्चा का विषय है कि अगर पीरियड्स आपके खत्म हो जाएं और फिर भी आपका पेन है, फिजियोलॉजिकल डिस्मेनोरिया इज पीरियड से आने से पहले आपको पेन होगा, पीरियड्स आने के बाद 4-5 घंटे के बाद सेटल हो जाएगा। बट अगर आपका पेन्स जो है पीरियड्स के दौरान बराबर है और पीरियड्स के बाद भी बढ़ रहा है, तो you need to see the doctor, and here the diagnosis will be endometriosis. If the doctor takes the history correctly, she can definitely say, even if there is no ultrasound features of endometriosis, if the pain feature is like this, for which she is not attending the school, she can start her an endometriosis treatment, and in 2 months' time, she will know that the diagnosis was correct or not. Thank you, ma'am. इसी से संबंधित एक और क्वेश्चन वन ऑफ द कंसर्न मदर हैज सेंट इट टू मी कि अबाउट द व्हेन दे आर टॉकिंग अबाउट द वाइट डिस्चार्ज, द मदर्स आर कमिंग विद कि मेरी बेटी को सफेद पानी जाता है और वो उसको लेबल करती हैं लिकोरिया, एंड दे आर ऑलवेज रिलेटिंग इट टू सम डिजीज। तो उसके बारे में मैम कुछ बताइए। देखिए, जब भी एडोलेसेंट की चेंजेस आती हैं तो एक बात बिल्कुल क्लियर है, डिस्चार्ज इज देयर इन 100% ऑफ पीपल who are matured, but that discharge never has itching, foul smelling or coloration. जब उसको पीरियड्स आते हैं, पीरियड्स हैं, पीरियड्स खत्म होंगे, डिस्चार्ज बढ़ जाएगा। The next 1 week will have discharge. Once she has ovulation, 3rd week, 4th week में डिस्चार्ज नहीं होगा, premenstrual pains में फिर होगा। And whenever this discharge dries up on a white panty, it will leave a stain. So you need to reassure her in front of her mother that everything is fine with her. She's normal girl. Okay, ma'am. Thank you. There's another question from the headmistress of Delhi Public School in Bareilly, Mrs. Abha Bharadwaj, and she says that how to help teenage girls in supporting their passion, encourage the open communication along with respecting their space. This was the question she had sent to me. See, question is, I think, यहाँ पर पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है कि मदर को और फादर को बताना पड़ेगा उनको कि व्हाट इज गुड टच, व्हाट इज बैड टच। एट द सेम टाइम आपको बताना पड़ेगा कि आपने 1 फीट, 1 हाथ के चारों तरफ
उससे क्लोजनेस ज्यादा नहीं होनी चाहिए. आई हैव सीन गोइंग टू वेरियस schools and colleges, people cling with each other. That's not normal. तो आपको ये सारी चीजें किसको बतानी है? पेरेंट्स को बतानी है, लेडी टीचर्स को बतानी है, इवन मेन टीचर्स को बतानी है. अगर वो दायरा हमारा से अंदर हो जाएगा, we are bound to be having a problems. It's a session for itself, madam. हमारे को खुद को ट्रेन करना पड़ेगा अपने को. एक रिलेटिव आता है, चाचा जी आते हैं, लड़की को बोलती है कि बेटा चाचा जी को पानी दे दो. वो चुपके से बोलती है मम्मी आप ही दे दो. क्यों एक बच्ची बोलेगी कि मम्मी आप ही दे दो? उसके पीछे छिपा हुआ राज है. उस अंकल की आपकी तरफ जो है वो जो थिंग्स है वो दे आर नॉट करेक्ट. द मदर शुड अंडरस्टैंड दिस. ये छोटी छोटी बातें हम लोग इग्नोर करना शुरू हो गए. दिस इज वी हैव टू लर्न. व्हाई माय चाइल्ड इज सेलिंग कि मम्मी आप ही दे दो. मैम दिस होम रोमियोस और शुगर डैडीज आई कॉल देम, 50% से ज्यादा प्रेगनेंसीज इनके द्वारा आती हैं. बड़ी बड़ी फैमिलीज में आती हैं. This is such a concern for all of us, madam. But that आप जो इंडियंस है ना, ये सेक्स के बारे में पता नहीं इनको क्या ऑब्सेशन है, क्या लड्डू मिल रहे हैं इनको. Thank you, ma'am. There's another member of Inner Wheel Club only from Bareilly, and she's wanting to know, ma'am, ये जो myths हैं about menstruation कि ये मत खाओ, वो मत खाओ, और ठंडे पानी से मत नहाओ, और अचार मत छुओ, और ये वाली चीज दही मत खाओ, तो उसके बारे में व्हाट इज योर से ऑन दिस? देखिए, मैं मॉडर्न मेडिसिन की स्टूडेंट रही हूँ और मैंने मॉडर्न मेडिसिन की किताबों में कहीं नहीं देखा ये. वहां पे कहीं नहीं लिखा कि प्रेगनेंसी में पपीता नहीं खाना चाहिए, अनानास नहीं खाना चाहिए. आई टेल देम, जो किताबें मैंने पढ़ी वहां तो है नहीं. बट एक बात है, बड़े लोग कहते हैं तो यार मान लो, उसमें क्या खराबी है. ठीक मैम, यही कहते हैं हम लोग भी. घर में रहेंगे ना और अब सब तो घर वालों की बात नहीं सुनेंगे तो क्या बात है यार. हमारे यहाँ तो यूपी में कच्ची रसोई या पक्की रसोई होती थी, तो कच्ची रसोई में जाना मना था. कोई बात नहीं, मस्ती है भाई, नहीं जाते. बाहर से आके कच्ची रसोई में जाना अलाउड नहीं होता था मैम. मैम हमारे आज भी होता है कच्ची रसोई पक्की रसोई. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप. मगर हम आपको क्लास में भी मैम ऐसे ही सुनते थे जैसे हम आपको यहाँ सुन रहे हैं. डॉक्टर मृदुला, हमारे ख्याल से डॉक्टर अमृता के पास कोई क्वेश्चन है. अमृता पूछना चाह रही है कुछ? मैम, मैं डॉक्टर भी हूँ और इनर व्हील की मेंबर भी हूँ. आपने इतने अच्छे से चीजें एक्सप्लेन की हैं और हम लोगों को हेडिंग्स दिया है कि हम लोग उस पर आगे काम कर सके. गुड टच, बैड टच के बारे में हम लोग बता सकते हैं, मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में बता सकते हैं, और कैसे स्ट्रेंथन करना है एडोलेसेंट को, इसके बारे में हम लोग बता सकते हैं. आपका टॉक बहुत ही एक्सटेंसिव और बहुत ही बढ़िया था. मतलब जितना क्रूड कह ले और जितना प्यारा कह ले, दोनों चीजें आपने बहुत अच्छे से टच किया. तो मैं एडोलेसेंट हेल्थ वर्कशॉप के बारे में एक चीज बताना चाहती हूँ. ये जो लाइफ स्किल वर्कशॉप है, ये टेक्निकल सब्जेक्ट है, इसको सीख सकते हैं प्रोवाइडेड यू वांट इट. नहीं, हम लोग बिल्कुल चाहेंगे इनर व्हील की तरफ से, इनर व्हील की तरफ से बिल्कुल चाहेंगे मैम इसमें आगे कुछ आप करा सके तो. वर्षा मैम, एक क्वेश्चन और आया है. डॉक्टर मृदुला, एक मिनट. डॉक्टर वर्षा कुछ, क्योंकि इस सेशन हम लोगों ने इनर व्हील के लिए रखा है तो उनके पहले सवाल. वो इनर व्हील वाले ही सब मुझसे भी यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे हैं. झड़ी लग गई है. अच्छी बात है. डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन इनर व्हील मेंबर की तरफ से ही आया है जो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ. हमारे इनर व्हील के प्रेसिडेंट हैं शिप्रा भदौरिया, वो ये पूछ रही हैं कि जो ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल पीरियड जो ब्लड फ्लो होता है, उसके कलर से क्या हम ये जज कर सकते हैं? मतलब बीइंग अ मदर, शायद वो ये क्वेश्चन पूछ रही हैं कि बच्चे का जो फ्लो का कलर होता है, उससे हम डेफिशिएंसी या एनीमिया का कुछ उसमें सिम्टम्स उसको दिखते हैं या कुछ ऐसा जज हो सकता है? मैम, मुझे एमडी करीब 50 साल हो गए. मैं हीमोग्लोबिन
हीमोग्लोबिन आंख देखकर नहीं बता सकते. मैं बोलती हूँ कि ठीक है, और वो मैं बाहर कहती हूँ उसको करा के लाओ, और वो लेती है 8 ग्राम. तो एट दिस स्टेज आई कैन फॉल्टर. मुझे नहीं मालूम और सारी मेरी जो colleagues हैं वो they must be much better than myself, but I'm admitting myself that I fail 20% of the time in assessing what is her hemoglobin likely it's going to be. So मेरी आपको डिक्टम है कि साल में 2 बार हीमोग्लोबिन पूरी फैमिली का कराना जरूरी है, और लड़की का हीमोग्लोबिन 12 से कम नहीं होना चाहिए, और लड़के का हीमोग्लोबिन 13 से कम नहीं होना चाहिए. लड़कों का अगर मेरी बात माने तो 15 से ऊपर ही होना चाहिए. Short of getting the test done, you will never know what is the hemoglobin status. And the maximum harm a community of this country is doing is between hemoglobin less than 12 gram percent and more than 10 gram. 10 to 12 वाला जो ग्रुप है ना, वो सबसे ज्यादा हार्म कर रहा है. We are 40% today in this group, और इस ग्रुप को बहुत ही जरा सा पुश करने की जरूरत है, and you will find in 6 months time they will be in a normal category. So मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है, spend little money which is about 300-400 rupees and get your hemoglobin of the family done. The day when you're getting it done, get it done for the driver's family, get it done for your maid servants and their family. So you do that particular job there and see to it that these tablets are given. मैडम, एक बार कई बार ऐसा होता है कि बच्चे समझ नहीं पाते हैं, उनको पीरियड में ज्यादा ब्लड जा रहा होता है, तो कब जैसे अंदाजा लगे हमें? मेरा क्राइटेरिया एज ए क्लिनिशियन आई एम टॉकिंग अबाउट. आई ऑलवेज पेशेंट सेज मुझे बड़े क्लॉट्स आते हैं, मैं बड़ी कमजोर हूँ, बड़ा यही यार बाहर कराओ, हीमोग्लोबिन पीसीवी करती है 1 मिनट में वो करती है, और अगर उसका हीमोग्लोबिन 12 है, ही रेस्ट शो, कोई घबराने की जरूरत नहीं है. माय क्राइटेरिया इज हीमोग्लोबिन एंड पीसीवी लेवल. And in my clinic now those machines are available digital, एकदम 1 मिनट में होता है, which is 99% accuracy. मैडम, क्या पैड के सॉकेट से भी कुछ आइडिया लगा सकते हैं हम लोग, क्योंकि बताना जरूरी है इन लोगों को कि हम कब कहेंगे कि any lady which soaks more than 2 pads, I think it's more, a mother should get concerned. Periods must stop on her own on the day 5. Anytime she passes clots, the mother should get serious about it. Hemoglobin is the best judge. She should take to the doctor. डॉक्टर वर्षा, और कोई क्वेश्चंस आपके इनर व्हील मेंबर्स के हैं? नहीं डॉक्टर मृदुला, एक क्वेश्चन और ले लें क्योंकि अब 5 बज गए. हाँ, बस एक लास्ट क्वेश्चन है मैम ऑन दी वैक्सीनेशन मैम, सर्वाइकल वैक्सीनेशंस. तो उसकी क्या एज है, कितना जरूरी है, और अगर वो एज निकल गई तो क्या उसके बाद वो हम लोग लगा सकते हैं? ये एक मैम लास्ट क्वेश्चन है, आप प्लीज बताइए. मैं यहाँ पर सेफ मदरहुड के सभी कार्यकर्ताओं से मेरी हम्बल सबमिशन है कि टुडे डेथ्स ड्यू टू कैंसर सर्विक्स are much more than the total maternal deaths in this country. We lose 25,000 mothers, but we lose 65,000 ladies because of cervical cancer. And this is one cancer which is preventable. The WHO guidelines have come. 90% people should be vaccinated. 70% should be screened. I am trained from PGI Chandigarh, so I will say 100% should be screened. If PGI people can do it, you can also do it. And 90% doctors should be trained how to do जब भी प्री कैंसरस लीशंस मिल जाए. अगेन डॉक्टर प्रीति को इस पर्टिकुलर एरिया में चेयरमैनशिप लेनी चाहिए. Our doctors do not know how to do VIA really. They have stopped doing per speculum examination. बस वो आले वाले डॉक्टर रह गए और अल्ट्रासाउंड वाले डॉक्टर रह गए. I'm very serious about it. That something has to be done. This vaccination is must. मैं आपको छोटा सा, if I'm exceeding time, when I got trained 13 years back in Hong Kong on HPV vaccination, that lady who was my teacher, there were 3 teachers, Dr. Stella, who is the advisor to both Cervarix and MSD. And there was a lady, Madam Grace from Canada. She asked me, Dr. Jain,
You are 60 years. I'm also 60 years. I have taken one vaccination. I'm visiting India. My second vaccination is due. Will you help me in getting the vaccination now? I said, look, in my country, it is permitted up to 45 years. It can't be done in my country. So she told me, Dr. Jain, नरेंद्र मोदी के पास इतना पैसा है, वो बोलते हैं 20 एक्सपर्ट्स को बुला के, भाई इतना पैसा खर्च करूंगा मैं कैंसर सर्विस में, आप बताओ किसको मदद करनी है। तो डिसाइड करते हैं। हमारे बराबर में अमेरिका है, वहां पर 1% को भी फ्री वैक्सीनेशन नहीं देते। कनाडा में 70 साल की उम्र के तक का हम वैक्सीनेशन फ्री देते। तो हर कंट्री अपने आप डिसाइड करता है, उनके एक्सपर्ट डिसाइड करते हैं क्या है। आपकी कंट्री में उन्होंने डिसाइड किया कि 45 ईयर तक पैसा होगा तो सबको फ्री वैक्सीनेशन देंगे, जैसे उन्होंने कोविड अब की बार दिया है ना। और जब ये हमारा वैक्सीन आ जाएगा नवंबर में, सबको देंगे ये एडोलेसेंट हेल्थ को, बट it will be available at a cheaper price for elder to people who are beyond 14 years, which will not be covered in the school, will be done by gynecologists. हमारी स्टडी और किसी की स्टडी नहीं, आयुष्मान की स्टडी है। If you just give vaccination to community, आपका डिजीज बर्डन 50% कम हो जाएगा। एक उससे सीखो, किसी और की स्टडी नहीं, हमारी स्टडी है। सबसे ज्यादा हार्म किया है किसी भी कैंसर सर्विस के प्रिवेंशन के प्रोग्राम में वो गायनोकोलॉजिस्ट ने किया। They don't know themselves. They have not given to their daughters. They have not given to their daughter-in-laws because their misconception कि 14 साल के बाद उसका इफेक्ट ही खत्म हो गया। We'll talk on some other day. That will be a session which is just exclusive for gynecologists. Thank you, ma'am. Thank you. I think टाइम ओवर हो गया। डॉक्टर वर्षा, आप कुछ, डॉक्टर मृदुला, हमारे ख्याल से सेशन अब खत्म करते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर वर्षा कुछ बोलना चाहेंगे आप? तो उसके बाद फिर वोट ऑफ थैंक्स हम लोग एक्सटेंड करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल प्रीति, मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। सबसे पहले डॉक्टर शारदा जैन जी को, जिन्होंने इतने सुंदर तरीके से हम लोगों को एडोलेसेंट हेल्थ के बारे में बताया। बहुत सारे मिथ थे, बहुत सारे डाउट्स थे हम लोगों के मन में, जो उन्होंने क्लियर किए हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी जितने भी इनोवील की मेंबर्स ने आज इसको ज्वाइन किया है वो इससे बेनिफिटेड होंगे। और हम सब, क्योंकि यहाँ से सीखकर हम इसको आगे भी अपने से जुड़े हुए जो क्लब्स हैं या जो सोसाइटीज में हमारे जो टॉक्स वगैरह होते रहते हैं, हम उसमें उन बातों को पहुंचाएंगे जिससे कि वो भी इसका फायदा उठाएं। उसके लिए मैं डॉक्टर साहब का धन्यवाद देती हूँ और साथ में डॉक्टर प्रीति का धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इस तरह का एक एसोसिएशन इनोवील के साथ किया है। और हम सब इन फ्यूचर इसका बेनिफिट लेकर कुछ अच्छे प्रोग्राम्स करते रहेंगे और इसी तरह अपने आप से सीखकर और हम सोसाइटी को कुछ और बेहतर देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। यहाँ पर आपकी टीम और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर वर्षा, थैंक यू सो मच। थैंक यू शारदा जी मैम, बहुत अच्छा टॉक था और बहुत अच्छा इंस्पिरेशन। मोनिका, यू वांट टू एक्सटेंड द वोट ऑफ थैंक्स? आई थिंक वर्षा मैम, इससे पहले जरा सा ग्रुप फोटो ले लें, वीडियो सब ऑन करके। प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज सब लोग अपने वीडियोस ऑन है। मेरे लिए तो ऐसा ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस है कि मैं अपने मैम के साथ यहाँ डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हूँ। तो जिनको हम क्लास में सुनते थे, क्लास नहीं मिस करनी है मगर बोलना भी नहीं है कुछ क्लास में। तो आज अद्भुत एक्सपीरियंस है मैम। मोनिका फोटो लो जल्दी से। योगेन, फोटो तो ले लेना है दो। थैंक यू। हो गया। Now I request Dr. Ruchika to propose vote of thanks. Thank you, Dr. Monica. Respected dignitaries and the audience, I feel honored to propose this vote of thanks on behalf of the organizing team. First of all, I would like to thank the Almighty for showering His blessings on us. I would like to express a deep sense of gratitude to our FOXY President, Dr. Shanta Kumari Ma'am, Secretary General, Dr. Madhuri Patel Ma'am, Dr. Kavita Bapat Ma'am in absentia, for giving this concept of social integration of medicine. With these collaborative activities between medicine and social platforms, we have been able to create more and more awareness to all levels, even to the grassroots levels. Next, I would like to thank our young, dynamic, cheerful chairperson of Safe Motherhood Committee,
Dr. Preeti Kumar ma'am. She is the force behind all these academic activities. I would say she is the soul of these all academic activities. And every day she comes up with new strength, new thoughts. Her demeanor tells us that if one wishes to shine like the sun, then one has to burn like the sun. Thank you, ma'am. You have always inspiring us. I would like to express my gratitude to Dr. Surjit Kumar ma'am, who is Associate President, for sharing her thoughts today. Dr. Varsha Kumar ma'am. Firoz, stop sharing the screen. Please don't share the screen. Okay, ma'am. Yes. Okay. Dr. Varsha Kumar ma'am, District Chairman IWC. She is ever smiling, cool, encouraging personality. Thank you, ma'am. And truly, ma'am, investing in adolescent health is key to unlocking lifelong health, productivity, and national prosperity. And we all will work together for it. I would also like to thank all the InnoWheel members, Dr. Anu and Dr. Amrita, for their presence. A big heartfelt thanks to Dr. Sharda Jain ma'am. She is truly a teacher of teachers, an iron lady, strict disciplinarian, and clinician par excellence. It is an honor to hear your words of wisdom. Thank you, ma'am. A big thank you to Dr. Mridula ma'am, a very dear senior who is ready, always with her untiring and unconditional support in all the activities. Thank you, ma'am. Thank you so much. I'm grateful to all the delegates who have left their personal and professional commitment to be with us. And many mysteries would have been unraveled, and we promise more such academic discussions in near future. Dr. Monica ma'am, my co-convener, thank you so much, ma'am, for always being my guiding force. In the end, just a few lines for this beautiful age of adolescence. खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा. खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा. अभी और उड़ान बाकी है. जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमां बाकी है. So to fulfill your dreams, invest in your health today. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you so much, Ruchika. And Varsha, we ensure that उन्नयन की जो सीरीज है वो सारे इनर व्हील के मेंबर्स के लिए बहुत फ्रूटफुल रहे. हमारे सारे सीनियर्स जुड़ेंगे और आपकी सारी क्वेरीज सॉल्व करेंगे. थैंक यू सो मच. और जितनी भी हेल्थ से रिलेटेड हम लोग की कैंप्स होंगे उसमें भी Foxy will be there with you for every camp, wherever you need us. Thank you so much. Thank you. Ma'am, I would also like to extend my thanks to the technical support, Walter Bushnell team, the whole Walter. Sorry, ma'am, I Thank you so much. No problem, ma'am. It's our honor to be associated with such a wonderful program. Rose, Yogen, and thank you. It would not be possible without your support. Ma'am, it would be our honor to conduct more such programs in the coming future as well with the Yes, we'll keep on helping you. करने फिरोज हर महीने करना है तुम्हें. बिल्कुल मैडम बिल्कुल. Thank you so much. Thank you. Thank you. Bye bye. Namaskar. Ending the meeting, Preeti madam. Thank you, ma'am.